Good afternoon. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we are running a series focusing SBI PO. How you can convert your dream of becoming SBI PO into reality. So already 5 videos I have posted. Now this is our 6th video in this series. In all these videos we have discussed various aspects how you should prepare comprehensively for SBI PO. Watch all these videos. If you have missed it, that will give you idea how you should proceed to become SBI PO. Every video contains very rich content telling you the right way, the right path. The motto of this channel is right advice at right time. If you will follow that advice, definitely you will improve your performance every year. Hundreds of our channel subscribers are getting success as SBI PO, and as on date, there are hundreds of our channel subscribers, those are working as SBI PO. Many of them has already moved to scale 2 and scale 3 also. I am helping the candidates since 2012 through my Facebook interaction, and from 2017 from YouTube channel, and this has helped many candidates to fulfill their dream of becoming SBI PO. So in yesterday video I have discussed how you should cover quantitative DI aspect, how you can build your foundation. Once your foundation is built, the second stage is practice, practice and practice. More you practice quant, more you practice DI, you become highly confident. So to gain confidence, it is very essential you should practice. And for practice, you should use 4 tools. One tool is full length mock test. Second tool is topic test. Third tool is sectional mock test, and fourth tool is speed drill. Use all the 4 tools to have very comprehensive preparation for quant. Link of these 4 tools is available in description and comment column. Click the link, register, take annual plan along with topic test, along with sectional mock test, along with speed drill, and apply coupon code AA03 to have 10% off. You can buy these plans through SmartKida app also. Download the app, select these plans and apply coupon code AA03 to have 10% off. Now topic test will help you to gain knowledge topic wise. Sectional mock test will help you to gain subject wise knowledge, and speed drill helps you to build your speed and accuracy. Speed and accuracy is very essential in competitions like SBI PO, IBPS PO, SBI clerk or IBPS clerk or any other competition. Sometimes you are good in knowledge, but due to lack of speed, you are missed out. Sometimes you are good in knowledge, but due to accuracy, you missed out. So if you can use a tool which helps you to build your speed and accuracy, you can be a winner in the competition. And that's why speed drill is doing wonders. So you must use all the 4 tools. Many people are only using one tool, that is full length mock test. But I will advise you must use full length mock test, topic test, sectional mock test and speed drill. These 4 put together gives you lot of advantage over others. Competition means have advantage over others. If others are performing and if you perform better than them, then only you can clear the examination. So for SBI PO, I have covered many aspects in my preceding videos. The entire playlist link is available in description box. Watch these videos and act accordingly. Second initiative we are taking is we are giving you 3-day schedule, and now we will move to alternate day schedule, and just before the examination I will move to daily schedule also. So follow that schedule. That will also help you. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. SBI PO ये काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है बनना. इस ड्रीम को हम रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लेकर हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहे हैं, और उसको मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है. 5 वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ इसके अंदर, और इन 5 वीडियो में मैंने विभिन्न चीज़ों को कवर किया है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें. राइट एडवाइस एट राइट टाइम इस चैनल का मोटो है. अगर आप इस एडवाइस को फॉलो करते हैं और उसको सिस्टमेटिक चलते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होता है. हर वर्ष सैकड़ों हमारे सब्सक्राइबर SBI PO बनते हैं,
और जब से मैंने ये गाइडेंस देनी शुरू की है 2012 से, सैकड़ों की तादाद में आज SBI PO ऐसे हैं जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं या जिन्होंने मुझसे गाइडेंस ली है। उनमें से कई ऑलरेडी स्केल 2 में भी मूव हो चुके हैं, स्केल 3 में भी मूव हो चुके हैं। तो 2012 से फेसबुक के जरिए और 2017 से यूट्यूब के जरिए मैं आप लोगों को ये गाइडेंस दे रहा हूँ और लाखों की तादाद में लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैकड़ों लोग SBI PO ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये जो मैंने वीडियोस बनाई है इसके अंदर मैं आपको होलिस्टिक व्यू दे रहा हूँ, कैसे आप सेल्फ स्टडी मॉड्यूल से SBI PO की घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सारे वीडियोस देख लेते हैं और उसमें बताए हुए तरीकों को लागू कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। अब कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वांट को कैसे इंप्रूव करें। क्वांट के अंदर जहां एक तरफ नॉलेज एक्वायर करना, बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना, फंडामेंटल नॉलेज एक्वायर करना निहायत ज़रूरी है, वहां प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस करना निहायत ज़रूरी है। जितनी अधिक प्रैक्टिस आप क्वांट और DI की करते हैं उतना आपका ये सब्जेक्ट मजबूत होता जाता है। और प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस के लिए 4 टूल्स मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। एक है फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जहाँ एक पोर्शन क्वांट या DI का होगा। दूसरा है टॉपिक टेस्ट, जहाँ टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तीसरा है सेक्शनल मॉक टेस्ट, जहाँ आप सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। और चौथा है स्पीड ड्रिल। स्पीड ड्रिल आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करके तैयारी करवाता है। स्पीड ड्रिल बहुत ही बेहतरीन टूल है जिसको आपको लेना चाहिए। इन चारों टूल्स को आप ले लें। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस लिंक को क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, एनुअल प्लान ले लेंगे, साथ में टॉपिक टेस्ट ले लेंगे, साथ में सेक्शन मॉक टेस्ट ले लेंगे, साथ में स्पीड ड्रिल ले लेंगे और कूपन कोड लगाएंगे AA03 10% ऑफ आ जाएगा। स्मार्ट कीड़ा ऐप से भी आप ले सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, चारों चीज़ों को आप ले लेंगे, चारों प्लान्स को, और कूपन कोड लगाएंगे AA03 10% ऑफ आ जाएगा। स्पीड ड्रिल आपको स्पीड और एक्यूरेसी बनाने में बेहतरीन टूल साबित हो सकता है। काफ़ी कैंडिडेट की नॉलेज होती है, स्पीड ना होने से पिछड़ जाते हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स की नॉलेज होती है, एक्यूरेसी ना होने की वजह से पिछड़ जाते हैं। तो जो कैंडिडेट स्पीड और एक्यूरेसी की वजह से पिछड़ते हैं उनको अधिक से अधिक स्पीड ड्रिल का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, आपकी स्पीड बढ़ सके, आपकी एक्यूरेसी बढ़ सके। इसके अलावा जो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं वो मैं आपको हर 3 दिन का एक टाइम शेड्यूल दे रहा हूँ, उसको फॉलो करिए। आने वाले दिनों में ये अल्टरनेट डे में हम शेड्यूल देंगे और उसके बाद इसको हम डेली शेड्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। एग्ज़ाम के दिसंबर के अंत में होने की संभावना है, नोटिफिकेशन का नवंबर में आने की संभावना है, इसलिए बिना उसकी वेट किए नोटिफिकेशन के अपने काम में जुट जाइए। SBI PO आप क्रैक कर सकते हैं अगर आप जो इस वीडियोस में बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। ये होलिस्टिक व्यू मैं आपको दे रहा हूँ और ये आपकी बहुत अधिक मदद करने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल।